I still one of my experience of acting exercises. In the beginning of days, हमें ये ट्रेनिंग मिली थी कि आप रास्ते में किसी भी इंसान को पकड़ो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाय वाला हो, कबाड़ी वाला हो, उसको फॉलो करो पूरा दिन. So I was following that guy the whole day, and उसके बाद आपको उसका एक सीक्रेट पता करना है जो उसने किसी को शेयर नहीं किया. And that character you have to play next day. Hi, and welcome to another episode of Talk and Talk. My name is Janvi Serene. I'm a fashion model, a content creator, and I'll be your host for today. We all love watching movies, we all have certain actors that we look up to, and we all have a shared dream of being in front of the big screen. If this is something that resonates with you, then this episode is for you. Our guest for today is Xander. Hi, Xander. Hi, Janvi. Xander recently debuted in Bollywood in Khalbali Records on Jio Cinema Premium, and that's what we'll be talking about, your shift from the modeling industry into the acting industry. Because with modeling, you know what you're in for, you know that you're supposed to wear these clothes, you're supposed to be super straight, you're supposed to walk, but with acting, it could be literally anything. You have to flow like water, you have to be anything. Yes, I still one of my experience of acting exercises. In the beginning of days, हमें ये ट्रेनिंग मिली थी कि आप रास्ते में किसी भी इंसान को पकड़ो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाय वाला हो, कबाड़ी वाला हो, उसको फॉलो करो पूरा दिन. और अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं भी किया है, आपको एज एन एक्टर उसमें जाना पड़ेगा. Yes, I'll tell you कि what is the reason behind it जो मुझे फील हुआ. So I was following that guy the whole day, and उसके बाद आपको उसका एक सीक्रेट पता करना है जो उसने किसी को शेयर नहीं किया. And that character you have to play next day. Interesting. So ये कैसे किया आपने फिर? बहुत मुश्किल था, बट किया मैंने. I was following one कबाड़ी वाला the whole day. That day I think जितना भी मॉडलिंग का जो वो था ना कि सिर्फ सुपरस्टिशन एंड जो स्टाइल वगैरह अनलर्न करना पड़ा थोड़ा सा वो भी. I think ऐसा था क्या? And by end of the day it was like I'm not taking myself seriously, which is actually quite in acting. क्योंकि मॉडलिंग में हमेशा टॉप नॉच दिखना पड़ता है, अपने बेस्ट कपड़े पहन के आओ, लेकिन यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता उस चीज. किसी को फर्क नहीं पड़ा, मुझे भी नहीं पड़ा end of the day. And then I played the next day that monologue. And second exercise was कोई कपड़ा आँख में बांधा हुआ था, and they divided in a few groups और हमें बाहर भेज दिया. We are smelling things. और उसको फॉलो करते हुए हमें वापस आना है. मुझे नहीं पता जो मेरे ग्रुप के लड़के थे उन्होंने क्या क्या स्मेल कराया मुझे. इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आपने बोला स्कूल में आप जाते हो, आपको एज अ बच्चा एक्टिविटी कोई मिलती है, वो होमवर्क मिला है आपको. So that was a process which changed me as a person completely now. I think thanks to this process who gave me sort of ability and experience to change myself.